topic of financial management. This is one of the very much important topic coming from your Unit 9 till Unit 8. We have completed the syllabus of Class 12. This Unit 9, the first topic of it is financial management. Finance की management कैसे की जाती है? It's also one of the part of management students and the students who are belong to commerce section. So you need not only to manage an organization, manage the people, manage the activities. The most important thing is also to manage the finance of business. Finance includes the all amount of funds that are included in business. So in today's session, firstly, you will understand what actually this financial management is, what its role and the objective mainly that is played by financial management. So let's start this class. Financial management समझेंगे students. Financial management is the management of flow of funds. फंड्स जब एक बिजनेस में आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पैसे को कैसे यूज़ करना है, उस पैसे को कितने टाइम बाद यूज़ करना है, कहाँ से उठाना है, इंटरेस्ट के साथ उसको रिपे करना है, क्या वो फंड ओनर्स का ही है, क्या वो फंड्स हमें बाहर से एज अ डेट उठाया है, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हाउ मच मनी इज़ टू बी यूज्ड, how much money is flowing inside the business and how that money should be used effectively. That is financial management, and it involves the decision related to dash and application of funds. Decision किस चीज से related लिया जाता है? Acquire करने से. Acquisition means आप funds को कहाँ से acquire करोगे, बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से लेके आओगे, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है. प्लस इट्स ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, हाउ दैट फंड्स आर टू बी अप्लाइड इन अ बिजनेस. और एक बिजनेसमैन को मैनेजमेंट के साथ अच्छे से मैनेज करके फंड्स को यूज करना है. यू कैन नॉट यूज द फंड्स लाइक वन साइड आपका पैसा आ रहा है एंड विदाउट एनी डीलिंग आप जस्ट पैसे को यूज किए जा रहे हैं, इफेक्टिव उसकी रिजल्ट नहीं निकाल रहे हो. हाउ दैट मनी इज गोइंग टू रिपे यू. इस एक इन्वेस्टमेंट से आपको कितना प्रॉफिट आएगा, अगर आप ये नहीं सोच रहे हो तो आपका जो फंड्स होगा माइट इट कैन गिव यू अ ह्यूज लॉस. सो application of funds is also necessary, and short term assets, how you manage those assets is related to financial management. Now basically financial management is concerned with mainly two aspects. What two decisions are taken in financial management? One is procurement of funds. फंड्स को आप कहाँ से एक्वायर या प्रोक्योर करोगे? आप बैंक से लोन उठाओगे, आप बाहर डेटर से पैसा लोगे, आपके पास ऑलरेडी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, आप वो यूज करोगे. And next thing is usage of that funds, how that funds are to be used in business. That is also financial management. So financial management का अगर आपको question आया, firstly you have to give a definition, the main thing या main steps that financial management involves, that you will write. This is all about the concept. Now we will see what is the major role of financial management. क्या रोल प्ले करता है financial management in a business? अगर आपको financial management की नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप competition में बहुत पीछे रह जाओगे. Business world में you cannot face that competition. How? Financial management plays a great role in maintaining the health of the business. Right? Business को कितनी like healthy business needs a good financial management. That's a very much requirement point. Now financial dash such as financial statements. Financial statements like balance sheet, profit and loss account show the firm's financial position. If you want to check how much a business is strong financially, the one need is to just check its balance sheet. Last year balance sheet आप check कर सकते हैं, उनका PL and L account check कर सकते हैं, and one can easily define its financial position. एक business की firm की financial position आप उसके financial statement से निकाल सकते हो. और financial statements को कैसे show करना है, उनको कैसे frame करना है, that is one of the important tasks of financial management. Most of the items in financial statements are affected
directly or indirectly by the financial management decisions. If your decisions are perfect, if you have taken the decision after completing studying all the factors, then somewhere your financial statement will also show a good position of your business. अदरवाइज अगर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस ही गलत होंगे तो आपका वही इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखने को मिलेगा. Alright students, so this is about the role of financial management. Coming to the last topic of today's session is what are the major objectives of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ टारगेट लेकर चलती है, क्यों एक बिजनेसमैन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अ बिजनेस. लेट्स सी. द वेरी फर्स्ट इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्या होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस का फर्स्ट मोटो क्या रहता है, टू अर्न द प्रॉफिट. It is an economic activity and economic activity is related to making money. Business हम क्यों करते हैं, for making the profit. So financial management का भी first task रहेगा profit maximization. So one of the important objective of financial management is the profit maximization, my dear students. Profit maximization is, it measures the dash of a company. It measures the performance. सो अगर आपको बिजनेस की या फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके, बाय लुकिंग एट इट्स टोटल प्रॉफिट. इफ you see the profits are going in upward direction or they are increasing year by year, that is their performance is also growing. In this process, the risk related by the firm is not considered. You never see how much risky decisions they have taken. That is not mattered. What matters the most is profit only. Okay, so digits matter here. Next is wealth maximization. Profit. कुछ फर्म्स का मोटो होता है प्रॉफिट, बट अल्टीमेटली व्हाट comes to last is wealth maximization. Wealth में क्या इंक्लूड किया जाता है, maximizing the wealth of equity shareholders. Equity shareholders are whom? Are those who acquire या who purchase equity share of any business. तो equity shares मैंने आपको बताया था, they are also the owners. So owners का कितना पैसा मिल रहा है, क्या वो अपने बिजनेस से satisfied है, वही होता है wealth maximization. और मैक्सिमाइजिंग द मार्केट डैश ऑफ इक्विटी शेयर्स. मार्केट प्राइस कि आप उनके इक्विटी शेयर्स का मार्केट देखिए. इफ़ वन बिजनेस हैज़ जस्ट स्टार्टेड और उसने टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा नेम फेम प्रॉफिट एक्वायर कर लिया है, तो नेक्स्ट ईयर अगर वो अपने इक्विटी शेयर्स निकालते हैं फॉर द पब्लिक और फॉर एनी पर्सन, so when people will come to purchase them, they have to pay more price. Why? Because अब उस फर्म की या उस बिजनेस का रेपो और बढ़ गया है, राइट. सो दैट्स वाई अगर उसके प्राइस इक्विटी शेयर से बढ़ गए, मतलब उस फर्म ने बहुत ज़्यादा मोमेंटम एक्वायर कर लिया है. दिस इज बिकॉज कंपनीज फंड बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स. मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीजेज if the benefits derived from a decision exceed the cost involved. ओके, कॉस्ट इन्वॉल्व जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है तो आपके बेनिफिट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे. सो दीज आर द टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड इन टुडे सेशन वी डिस्कस्ड व्हाट एग्जैक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, role played by financial management and major objectives. I hope with this session you clearly understood the topic very well. In next session I will meet with you another topic. Till then, stay tuned. Thank you.